Nana. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ. Uh, it really gives me immense pleasure to be here among the galaxy of uh, intellectuals, public servants, professionals. We are basically we are intellectuals, but among we are also. So, on behalf of the organization Rashtriya Boudhik Manch, I am really delighted and privileged to welcome you all to this episode of our webinar series. And before we start our I would request the General Secretary of our Mr. Tapas Parida to give a brief of our organization. Sanjeeb Parida is a dynamic leader who works in science, electronics, electricals, and has been leading from the front. So, Mr. Tapas Parida will give a brief of our organization. Tapas. Namaskar and Jai Jagannath to all. Thank you, sir. Thank you so much, Dr. Saraj Mahanandji. Before I proceed, I must present audience that Dr. Saraj Mahananda work as associate professor of English in Jamia Millia Islamic. He is a dynamic scholar with many publications to his credit. He is a senior member of our RBM. Coming to the topic of RBM, I feel really privileged to speak about organization Rashtriya Boudhik Manch. RBM is a pan-India independent registered non-government and non-profit civil society organization headquartered at New Delhi. RBM's prime motto to capability and service delivery to disparate and marginal people of the society. We are an intellectual forum consist of group of the educationate, dynamic, like-minded persons working in diverse fields and presenting all work of the society. Over, over the last 1 year, we have had so many high-level seminars and programs in Premium Institute of Delhi like IIT JNO. We are fortunate to have honorable we are fortunate to have Honorable Union Minister Shri Pratap Sarangji as chief guest of one of our program. Eminent Dr. Ashok Mahapatraji, Railway Secretary Sushant Mahapatraji, former MSM Secretary Arun Pandaji, former HRD Secretary A.K. Rathji, BJP National Vice President Shri Baijant Pandaji, many eminent scholars from various fields. Based on discussion and outcome, the speaker and audience, we have taken up it with the concerned authority for implementation. We are not only a forum of table talking professionals, we also believe in working on the ground to serve the people of our great country. During the lockdown period, our member were on the street of the Delhi, distributed 30K, 30,000 pack cooked food material for the 24 days to the need and unprivileged people. RBM joined the national morning and pray for the Pulwana massacre with the candle march at India Gate within the 24 hours of the Pulwana attack. RBM believes in the collaboration and bonding in society for which we have organized two Paribar Milan of the like-minded family in Delhi. All above the point out to achieve the aim and objective of RBM in faster pace. We aim is positive contribution to nation life of the country through the various research and publication initiative. This webinar is
one of the this initiative. In this content, I would like to request President of RBM to say few words. Before that, I must present the audience. Mr. Sangram Patnaik is a renowned advocate of our country, having standing of more than 25 years in Supreme Court of India and the High Court of various states, a specialist in the commercial and company law, practicing many TV debate and columnist, teach corporate law in the prestigious university in India like Symbiosis and etc. Over to Sangram Bhai. Thank you. Namaskar. I was thinking this introduction of mine was probably not needed. So much eminent speakers are here today to hear. But be that as it may, before the topic is quite a brilliant topic on today's contest. The new farm bills, a big leap forward for Atmanirbhar Bharat. Before I go to the topic and the speakers, one of the famous sayings of John Frederick Kennedy, the former president of the United States, he once said, the farmer is the only man in our economy who buys everything in wholesale. And if I proceed, if I can request my friends to mute so that there's not any disturbance when anybody speaks. I think I'm audible, huh? Just mute your speakers because there is some background music is coming. So therefore, I would humbly request if you can mute your speakers. So I was on the John Frederick Kennedy saying, who said once, the farmer is the only man in our economy who buys everything at retail, sells everything at wholesale, and pays the freight both ways. What a saying. That's still applicable to our country as on date. Of course, there is no gainsaying the fact that the farmer is a magician who produces money from the mud. And, everybody would agree with that. And, we go on discussing, go on doing debates, one after others. But the net result till date is, I would not say zero, but it is in minus. And if the present government has taken these steps and worthy of its cause, we must at least, if not appreciate, at least discuss and would definitely keep our points to the government of the day. That this is probably the correct one or the interpretation of the act. Now, I would definitely go by the saying of our own beloved Prime Minister on 26th November 2016 on an eventful Man Ki Baat program. He said, मेरे देश की ताकत गरीब है, गरीब की झोपड़ियों में है, मेरे देश की ताकत गांव में है, मेरे देश की ताकत किसानों में है. हमारी गांव और हमारी किसान हमारी अर्थव्यवस्था की मूल स्तंभ है. उससे अच्छा मेरे को नहीं लग सकता है कि कुछ भी हो सकता है. And so apt, people going on doing debates after debates, but nobody actually realizes the importance of the farmer and their difficulties. Ultimately, on an eventful day, the government of the day thought that yes, there are 3 farm bills which need to be presented, and ultimately we are debating today or discussing. The bill has already become an act. Only 7 days or 10 days before, our Honorable President of India has given the assent. Now, these 3 acts are the topic of the day. One is Farmer Produce Trade Commerce Agriculture Promotion Act 2020, Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020. Third, which is the most important according to me, Essential Commodities Act Amendment Act 2020. The first mentions the Act 6 to enable the farmers to sell farm products in the places outside the market yards regulated by the APMC. Second, I'll just touch upon only one line. The Second Amendment Act seeks to provide the legal framework for contract farming agreements. This is most relevant. And the third one seeks to relax the food stock limits and the price control over the food items like cereals,
pulses, potatoes, onions, edible oils, etc., etc. Being an organization of intellectuals, we are not claiming that we are intellectuals. We are probably the least intellectuals, but we can bet and assure to the humanity at large that the intellectuals which we are having today and tonight, the speakers, are actually the battery of experts on their own self. They have actually acquired their expertise over a period of time, and they're the domain experts. So I would definitely, like to hear the words of wisdom from our three eminent speakers tonight. One is Mohini Mohan Mishra ji, the National Secretary of Bharatiya Kisan Sangh. We fondly call him Mohini Bhai, and probably the entire world knows him by Mohini Bhai. He requires no introduction. Of course, my beloved brother would do the rest. Second is Mr. Kumar Patnaik, former Secretary, Ministry of Agriculture, Government of India. Third is the Sanjeeb Kumar Patjoshi, Joint Secretary, Ministry of Panchayati. See, I'm not taking the name in the sequence that they would be speaking. They know their slots. So my only request is that we must take the gems of knowledge which we are going to get this evening. And now I would request one of my favorite and the most beloved, Professor Sukumar Mishra. He belongs to our organization, but he is a part of our organization. He is actually the backbone of our organization. Like the farmers are the backbone of our economy, Mr. Sukumar Mishra is the backbone of our organization. Now I would request my brother, Professor Sukumar Mishra, to chair and take it further. Thank you very much. Over to Sukumar, sir. Thank you, Sangram Bhai, for giving me this opportunity to chair this very important discussion point. Before I start the proceeding, now I request Tapas to introduce some of our dignitaries who are there in this august audience, and over to Tapas to introduce them. Then we will start the proceedings. Thank you, सुकुमार जी. आज हमारा साथ जो डिग्निट है, मैं उनका परिचय कर रहा हूँ. हम सबका जो आदर्श प्रेरणादायक माननीय अजित प्रसाद महापात्र, वो अखिल भारतीय गौरक्षा गौ सेवा प्रमुख, आरएसएस का अखिल भारतीय अधिकारी है, सीनियर प्रचारक है, माननीय अजित प्रसाद महापात्र है, यहाँ पर है. उसके बाद मैं बोलूँगा डॉक्टर कितीश भूषण दास, ओबीसी इग्नो. कितीश जी यहाँ पर है. और माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दास, ओबीसी इग्नो. राजेंद्र जी यहाँ पर है. डॉक्टर अमूल्य के पंडा, डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इमोलॉजी, अमूल्य के पंडा जी यहाँ पर है. और डॉक्टर पवन के बंस अग्रवाला, बीसी ओईटी, ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, पवन कुमार अग्रवाला जी. थैंक यू संग्राम भाई. थैंक यू सुकुमार जी. ओवर टू यू. Thank you for introducing the dignitaries who are on the platform. And though it is a virtual platform, but by looking to the video and the camera, partially it looks like live, but definitely not live. We will expect the live will come probably very soon. With this basic expectation that we will meet very soon and we will go for a physical sort of meeting in the very near future. Now I will start with Dr. Patjoshi, Sanjeeb Patjoshi. He is one of my best friend also, and we have discussed today in the morning also regarding different aspect of the different law and other things which are relevant to the country's prospect and those things. With basic introduction to him, Dr. Patjoshi is an IPS by cadre, and he is ADG and Joint Secretary to Government of India, and now he is in Ministry of Panchayati Raj at Delhi.
Previously, he was also posted at Joint Secretary and Director, National Institute of Corporative Management and Director, Spark International Center of Agricultural Banking Ministry of Government of India in the Department of Agriculture, and the institute was at Pune. He has also served as Managing Director and Chief Executive of three public sector of State Cooperative Dairy Milk Federation, State Road Transport Corporation, and State Film Development Corporation. He has a very wide varieties in this flavor. He is also the Communication Officer of United Nations Mission in Kosovo, Europe academic qualification, and he is, as I have already mentioned, he has a doctorate degree in economics, and apart from this doctorate degree, he is also a MBA from IIM Bangalore, combined with Cyrus University, USA, and also he is a MTech from IIT Kanpur. So he had a vast experience in the education domain as well, starting from technology, going into the management capability, and finally entering into the financial aspect by making a PhD degree in economics. Apart from his education and the degree that he has accumulated, he has also got the President of India Medal for Meritorious Service in 2016. He is a distinguished alumnus, that is Satyendra Dubey Memorial Award from IIT Kanpur in 2011 for his honesty, integrity, and he has also got the Distinguished Alumnus Award in 2019 from NIT Nagpur, from where he has done his bachelor degree. Apart from that, United Nations Medal in 2001, Best Director Award from Competition Success Review in 2015 and 16, and many more accolades to his feather. With this small introduction, now I request Dr. Patjoshi to introduce about the new farm law and put his view in the concept of these specific challenges government of India as well as India is going to handle. Over to Patjoshi sir. Namaskar, warm greetings to you and good evening to all. And today's the Professor Kumar Mishra, who is chairing this webinar, and he's a good friend of me and very intellectually we interact very every now and then. I learn from him from various his academic excellence. Mr. Sangh Patnaik, also good friend of me, and he's a senior advocate in our Delhi Supreme Court and High Court. Mr. Tapas Parida, also good friend of me, and we really have very close interaction in many India's and Odisha development aspect. And all dignitaries in this webinar, I really congratulate the organizers for having this very relevant and the contemporary topic of farmers reform. And you all may be knowing India is already Atmanirbhar in agriculture produce. I think right up to from the Green Revolution, which happened in 60s, and we are producing more food grain than we consume. So we are in export position. We export quite a number of things from India, even food grain and food products to all over the, and not only agriculture itself, allied sector also, dairy products and the meat products also we export a lot to various countries, including Gulf and Western world of America or even Europe and all in Eastern East Bloc like Japan, including fish and all those things. So India is a very Atmanirbhar in our food product because we had a big population and we rightly that time Green Revolution, Norman Borlaug and Swaminathan, all those people really led that very big way. And in the Odisha also is a good surplus in the food production, especially paddy and all those things. But now the farmers actually, Government of India has mandated by 2022 farmer income should be doubled.
And there is also MS Swaminathan Commission report was that a cost plus 50% profit, because the farmers are has to get some profit, because they're also in certain level of business of growing crops, and they should also get profit substantially compared to other profession. When you do a industry business, or they get a good profit. So why not farmer? And you also maybe know, initially after independence, the farmers were left unorganized, and that's why the initially came that we should organize the farmer. They should have a bargain value. But I point out here, I've been fighting right from 2007 when I became the managing director and chief executive of Dairy Milk Federation. I really understood the farmer's plight. One still lacuna, the farmer are not given status of skilled labor till now. Only 18 to 20% those who are working in a value addition thing of agriculture sector, they are called skilled labor. That is called Indian Agriculture Market Research Report. But I feel that all farmers, those who are landless or sharecropper or tenant farming or anything, even the plantation crop farmer, all those farmers, dairy farmer, animal husbandry farmer, poultry farmer, they should be given a status of skilled labor status. This is reason because the many human being is such a basically respectability is more important than money. And once you give that respect, and this has happened earlier, I'll tell you, during Bajpayee government, the film industry was not being recognized as an industry. So they were going for the black money funding, many underworld funding. But that time, very interesting development came in the film industry, because I also was associated that the film industry was given an industry status. After the industry was with their heads high, they used to go to bank and get loan. They used to insure their film products. It is software thing to insure. So that recognition is very important. And farmer have to, we should make a movement, especially from the state government side or central government. I have projected many times at various fronts, but still I yet to get success in this thing. Farmer has to be declared a skilled labor. It doesn't cost money. It's basically in our government sector or government employment. We don't have class 4 employee now. Everybody is class 3, because that is to elevate the status of any business or trade or any service. The farmer have to get that. Secondly, recent reform means very game changer, and it has to help farmer only. Earlier, the APMC Act, the Agriculture Produce Market Committee Act, actually any farmer has to be a member that used to give certain percentage of his income. Now Haryana reduced it to from 4% to 1%. Different state have different act. So in that, but there was a allegation that middleman, the big level broker come into picture, and they really make the farmers produce buy at a lower price. And this was going on a serious moral hazard. I mean, the in the management concept is called moral hazard. Basically, we want the internet to help the farmer, but it happened that some other fellow took the benefit. So it is moral hazard happening. So to remove that, now this reform bill has come. And after that, the government initiative is ENAM, Electronic National Agriculture Market. So where the farmers should go and electronically get the trade and pricing, proper pricing, they can discover the price and sell at the price. That already more than 400 markets, as per my knowledge goes, information goes, have already been integrated with ENAM. Another very interesting that the food and perishable product, basically foods and fruits and vegetables, already had been accepted by from the APMC. They did not have to go to APMC, Agriculture Produce Market Committee. This was long ago. Many states had done to go to be there, but cereals, grains, long shelf life grains have to be done there. Now that is also free. And secondly, India is one country, so farmer didn't have freedom to move from one state to another state. Now it has been done. Secondly, the essential commodity, the limited quantity you can keep at your place, that also has been done away. This is really a beneficial to farmer. But there is apprehension that the small farmer will have a problem, because they say that the small farmer cannot have a transport facility to take it to far away. But there is already government is working on the rural hearts. More than 25,000 rural hearts have been already in the village level, that so the farmer can go to that rural heart, sell their produce, and the rural hut also small storage facility also will be created. Maybe it will be chargeable farmer at a nominal rate, but whatever produce it takes to farmer market, he need not bring after the evening hour back to home. So it can keep there, because that's one of the problem. Farmers faces a lot of difficulty. I have seen in Odisha, the farmer in the
winter season, they go with the tomatoes market at around 8 o'clock, 9 o'clock, the farm market closes. If they cannot sell it, they just dump it at the place, because taking back that tomato back to their home through from transport costs them very heavily, and next day bringing them. So they think that better to keep there and leave it just like that, because it's hardship also and costly also. So if his storage is there at rural heart, some storage, garden storage, so he can keep and pay some rent, and next day he can take the same tomato out to sell it. This will be very good, big for small trader, and this is also in the already in the pipeline. I think rural hearts will have some go down facility, some storage facility, and it is not a longer duration, but 1 or 2 nights that way, whatever the possibility. And another important thing is that government also already mentioned that MSP will continue, because minimum support price guarantee has to be there, because free market economy sometimes doesn't work. It is may work in various other goods, but in agriculture produce, basically it's a seasonal bumper crop. The price crashes very fast, and in off-season price jumps up very fast. So obviously the bumper type, we have to ensure certain reasonable activity of price, so that MSP, minimum support price, it happens in paddy and rice. Now it has been extended to many other crops. Sugarcane also, it is a fair remunerative price. It is called FRP. It is not MSP for sugar, but FRP, fair remunerative price. So obviously these are all linkages we must want to have. Then only the farmers, really those who are having really problem in their produce. And of course, we must teach the farmers certain basic thing how to store at home itself. Because like onion needs only aeration. It doesn't require refrigeration. Just to air should be there, so that it doesn't have it has moisture inside. Fungus should not grow inside. Similarly, garlic also. These are all small technique. In the stacking way, onion can be done long way. Similarly, the infestation happens in many grains. So what to give that? We all advise in our rice also at home. We put red chili inside rice, so that the insect will not come. So obviously these are a small non-costly technique. If you teach farmer, they can put their grains and all this long time. And obviously farmers, even now I have seen in Odisha, rice mill take really give discount to the farmer, because they take from the farm gate, take to rice mill and dry up. Because earlier days I have seen in your childhood, or all of us have seen that the farmer used to cut the grain or crop and dry in the field. Now it's not possible. Immediately taken to rice mill, the moisture in the paddy will be 30% when harvested, so it has to be lowered to 17% by drying. So rice mill does this, so obviously it takes the cut and farmers gets less paid. So these are all technical implementable problems. One has to think of that, because I have really faced this issue. Even the MSP is declared 450 rupees, but farmer is given around 400. And the transportation problem, because the rice mill arrange the transport, because the trucks and all those things cannot be done by farmer individually, especially small farmer. So rice mills take the really it cuts the price while giving the, even though MSP is ensured for them. So we have to discuss in a very practical way. I hope the farmers are improving better. Even the government has done the Kisan Samman Yojana, and which is 6,000 per annum, and which is basically WTO compliant also. World Trade Organization, a lot of in agriculture also. But if you transfer direct benefit to farmer, it is not violative of international agreement to which India has been signatory. Because even US does the same thing. Rather, US doesn't subsidize fertilizer, doesn't subsidize equipment. In India, we are subsidizing fertilizer, we are subsidizing in the irrigation facility, we are subsidizing even agri equipment also. But now it has been started that we should give to government of India giving 6,000 per annum under the Prime Minister Kisan Yojana to farmers. So farmers definitely. At the same time, we should encourage the crop insurance, because crop insurance, government has already reduced the premium. The Kharif is 2% or Rabi is 1.5% similar, but still crop insurance has been very low penetration in our India. And Odisha, we must, because the eventuality of any vagaries of nature, storm, cyclone, or flooding, or sometimes drought also. So obviously the insurance should be compensation, very good compensation for farmer. We are still very lacking in that, and we should encourage the farmer to. And government really cross subsidizes. Part component of premium is paid by government, so we have to encourage that.
And with this, I really just have want more ideas and mind to suggestions to further implement. But again, I repeat, the farmer to be given a skilled labor status. This should be the movement in our India. In Western countries, is there. So they are highly skilled, maybe uneducated, but they know how to harvest, how to cultivate, how to do all this activity. Even sometimes they do future contract also, that hedging and future contract. Especially potato, I know the Pepsi has a future contract. Future, this also the reform bills also does that future contract concept in our agriculture also. Thank you once again. I congratulate you and wish you all the best. Thank you very much. Thank you, Dr. Patjoshi, for a very nice discussion point raising with this farmer aspect. And it is really lightening and enlightening to know that the issues of farmer, specifically, as you rightly mentioned, the recognition need to be provided, and any human being always go by recognition and not by the financial aspect in a big way, as mentioned by you. So recognition is the first goal. Then it comes to the financial aspect. Apart from that, the green revolution philosophy that has been put forth by you and also already followed by Government of India is a leapfrog approach for making the food sufficiency in the country. However, one important point probably can be put into the aspect, and if some of the speaker can highlight some of the point on that, is the quality of the farming material, that means the farming outcome, as well as the quality of food material, that control, quality control, whether it can be effectively implemented and effectively coming into the country in terms of some sort of act and law. That will be a great opportunity as well as great step forward in the context of food material. Now I request our second speaker, Dr. S.K. Patnaik ji, to put his view into the farm aspect and in the context of new farming law, in fact. And to introduce Dr. Patnaik, he had joined the Indian Administrative Service in 1982 and has superannuated as Secretary of Government of India, Department of Agriculture in specific, and Corporation and Farmers Welfare in 2018. So he is totally into the farming aspect and in particular to the agricultural scenario. He holds a PhD degree from Gulbarga University and earned his master in biological science with honors from Birla Institute of Technology and Science, Pilani, and a postgraduate diploma in environmental law from National Law School of India at Bangalore, and diploma from equally National Administration, Paris, France. Dr. Patnaik joined the Karnataka cadre of Indian Administrative Service and served in various capacities such as Assistant Commissioner, Kundapur Subdivision, Project Director, Rural Development Society, Raipur, Director of Fisheries, and many other respective positions in different government, specifically in the Karnataka and particularly in many areas of Bangalore. In his career spanning over 36 years, Dr. Patnaik has made noticeable contribution to administration and development, especially in the field of agriculture and horticulture. As founder National Director of National Horticulture Mission,
His contribution has impacted the accelerated horticulture development in the country. He is credited to have shaped the Indian perspective in international agriculture through engagement in governance of three Rome-based UN food and agriculture agencies, such as Food and Agriculture Organization, World Food Programme, and International Fund for Agricultural Development by membership and leadership of important government bodies by providing functional guidance while working as minister in agricultural department, ministry in agricultural department. He is elected as president of the executive board of the World Food Programme, the Nobel Peace Prize winner for 2020 for the year to 2012. Dr. Patnaik has headed many high-powered committee, both at national and international level, for providing policy framework. As Secretary of the Department of Agriculture, Government of India, his leadership resulted in India witnessing a sort of pulse revolution during the year 2016-17, when the production of pulses jumped from existing 17 million ton to that of 24 million ton, a free-glopping characteristics. And he has also been credited for the turnaround of NAFED by providing an enabling environment to the organization to realize its true potential. So he had a very vast experience, not only in the Indian context, but also in a world forum philosophy. And we request Dr. to put his view in this specific domain and specific aspect of new farmland. Over to Patnaik. Greetings of the day. Can you hear me? We are able to hear you. Yeah. Okay. Good evening, everybody. At the very outset, I am grateful to the president of the esteemed organization, that is Rashtriya Boudhik Manch, Shri Patnaik, for inviting me to be a speaker on this occasion. I am also grateful to Mr. Tapas Kumar Parida, who has been constantly been in contact with me to participate in this particular workshop. Esteemed chair of this session, Professor Sukumar Mishra ji, Mananiya Shri Mohini Mohan Mishra ji, Mohini Bhai, who is the National Secretary of Bharatiya Kisan Sangh, my former colleague in the ministry, Dr. Sanjeeb Patjoshi, who is an eminent scholar himself, and so many, a galaxy of eminent persons this evening. I am really very pleased to be present amidst you. Dr. Patjoshi has put the perspective in a very lucid manner before you, the entire development of where agriculture stands in this country and why these laws were promulgated by the government of the day. I'll just briefly touch upon the three new changes which have been made by the government very recently, first in the form of an ordinance. Later on, it has become an act of parliament. The Farmer Producer Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act, it's a big name, but for the sake of simplicity, I must tell this act is basically an act which gives an option to the farmers or the farming community to sell their produce anywhere in the country without any, fetters. Traditionally, if I trace back the history of agricultural marketing in this country, immediately after independence, what was happening was the farmer was directly going to the money lenders. Those days banks were not developed. Those days nobody was there. We are producing food only to exist. So there was a direct nexus between the money lenders and the farmers. The farmer was exploited to a significant extent, for which the government of the day then thought
that we'll bring this APMC Act. So the APMC Act mandated that all the agricultural produce shall be marketed in a mandi, and this will be done by authorized where the traders are registered, where the farmers are registered. Now, initial years, this went on very well. It is no problem. But over the last 50, 60 years, now this has degenerated into a monopoly. Now, if I have to become a trader, I just cannot get a license to go to a PMC mandi and take a license because I want to trade in agricultural produce. I want to help the farmers. Because the farmers, because the traders who already are members in the PMC, they will ensure that SK Patnaik does not enter the trade. So naturally, this has resulted in a monopoly. Now, what started as a good initiative has resulted in a monopoly, and therefore, this has become an exploitative system which needs to be broken. India of the yesteryears was totally different. There, the international market was not there. We were hardly having hand-to-mouth existence. We were not having sufficient rice and wheat to eat ourselves. Now we are in the age of surplus. We have exported more than 10 million tons of rice every year, and India is the biggest producer of rice. Similarly, you take even cash crops like pomegranate, mango, grapes. They're exported all over the world, and our farmers are doing this. Therefore, if this were to reach we have to become a leading producer in the world. We need to integrate ourselves in the world market. The WTO, as you know, we signed an agreement with WTO way back in 1991. Everyone took the benefit, but not agriculture. So if agriculture has to take the benefit of this, we need to integrate ourselves with the world. Then only our agriculture will become more efficient. Second aspect is, everyone says that our GDP till now was growing at 8%, 9%, and we have a dream of making that growth possible. But at that point in time, when the general growth of the country was of the order of 8, 9%, the agricultural growth was a minuscule 3% or 2.5%. Now, if agricultural growth has to increase, then we need agricultural investment. You know, agricultural investment basically comprises of investment by the government and investment by the private sector. Now, investment by the government is doing. But we are not encouraging the private sector to invest in this, though agriculture is totally in the hands of private people. So we have restricted, we have tied their hands and we tell them to run, tied their legs and told them to run. So therefore, if investment has to flow into this, we must provide an enabling environment by which the private sector can best bring in the latest big investment. They should bring latest technology, and they should make our market very efficient. And this is possible under the new law when a freedom is given to the farmer to trade outside the traditional mandi boundaries. And this is precisely the point the present the present Promotion and Facilitation Act has done. So in the long run, what will happen? There will be a direct connect between the producer and the end user. Of course, the number of intermediaries who are now hell of a lot of them, they will come down significantly, and therefore this amount which is actually being utilized by large number of intermediaries will actually devolve to the farmers, and farmer will have better income in the new regime than what he was having. This will also drive the dream of the Honorable Prime Minister to double the farmers' income. So this is so far as the first part is concerned. Now I will touch upon, now you may feel that why there is then controversy, why there is agitation and all. The agitation is not so much by farmers, it is more by certain vested interest, because the people who are the beneficiary of the existing system, they will not get their commission, they will not get their money, and therefore they are today agitating. In fact, the traditional method of selling in the mandis, it has actually attracted only few states. Today also, the concept of MSP or the minimum support price which is there,
The benefit of this is flowing to only 6% of the farmers. And 35% of the total agricultural produce actually is taking the benefit of MSP so far as rice and wheat are concerned. Take the case of Odisha. How much rice is sold to the FCI there? The FCI procures from Odisha, but it is not so much. Bihar also produces rice, but not a single kg of rice actually FCI buys in Bihar. But in the new system, what will happen? FCI is not the only person who will be buying. There will be a whole lot of new actors, and the farmer will have better opportunity in selling to large number of large number of actors, and this will break the monopoly. So this is so far as the first law is concerned. The second law is relating to Farmers Empowerment and Protection Agreement and Price Assurance and Farm Services Act. To make it simple, it provides an enabling framework to do contract farming. Contract farming in a limited way does take place in India, but the ground rules are not defined. This law will strengthen the hands of the farmer to bargain better with the processor, with the end user, with the retail traders, with the food processors, to enter into an agreement even before the season. And by entering into an agreement, they will also know at what price the goods will sell. For example, there has been crisis of onion and potato, which is highly volatile. If before the season, the farmer can be ensured that I will sell my onion at 20 rupees a kg, and he is happy with that. Maybe the price ruling outside in the market, maybe 30 rupees, maybe 40 rupees, maybe 10 rupees, but he is sure that he will get 20 rupees. So the new law provides for either a fixed rate contract, which is 20 rupees, or it must have a reference point contract. That means if the price of onion is 30 rupees in the market, then maybe the trader or the processor will enter into an agreement that the reference price plus 1 rupee or 2 rupee I'll give. So the farmer has this option in the new law. This was not there earlier. So the question of exploitation by the new actors also is actually not so real. It is more imaginary. And the new law provides for a dispute resolution mechanism, which will be that at the level of the subdivisional magistrate or tahsildar, which is different from going to a law court. Many people have asked, why not to a court of law? We all know courts of law take long time, and justice will be delayed is justice denied. So the executive, the people who are in touch with the farmer, the government which is in touch with the farmer, will take the decision quickly. So the dispute resolution is also ensured in the new law, and this is a very unique change which has been brought. Now, concomitant with these two changes is also the amendment of the Essential Commodities Act. In the earlier regime, what used to happen, whenever there was volatility of prices, the government used to impose bans either on export or on stock limits. So the private people were not encouraged to invest in agriculture, invest in warehouses, invest in storage, invest in using technology, because they know for sure if I keep a lot of thing for my processing, then suddenly government may impose ban or stock limits, and then there is no incentive for me to do that. But in the new system, government has taken a conscious decision that this will not be, the Essential Commodities Act in the traditional sense will not be misused, and this is also going to strengthen the private players from actually entering into trade negotiations with the farmer. So all these three changes coming together is definitely going to produce results. Had only one of the changes been brought about, then it would have been incremental, it would not have resulted in any benefit. So therefore, we must wholeheartedly explain the provisions of this to the various farming community, and I'm certain they will benefit. And in the result, what will happen? There will be better income to the farmers. India is a vast country. There should not be fear that multinationals will come and they will unilaterally decide what is to be in the farmers, and farmers' distress will particularly increase. This narrative has been given by certain people. It is not true. There are multinationals who are engaged in potato chip making,
The people who are doing growing varieties of potato, who are for chip making, they're getting better price. The grape growers who are exporting, they're getting better price. There are also multinationals who are buying from the grape growers of Maharashtra, the pomegranate growers, the mango exporters. So all these people will definitely get a better market, and market will definitely rule supreme. The price discovery will take place through the market. It will give a signal to the farmer to grow the right variety of crop, and there will be not excessive dependence on the crops which government will be forced to buy. Second aspect I want to say, which the chair, Professor Sukumar Mishra, told about, the quality control. Automatically, quality control will be ingrained in the new system, because when there is a direct connect between the consumer and the consumer will demand a certain higher price for certain quality goods. So this will be definitely communicated back to the farmer, and the farmer will grow that variety. He will grow that particular size of the pomegranate or mango. And on, for example, it is lady's finger. A particular quality of lady's finger will only come to the market, and the consumer will be happy. You will pay higher price. Now, for growing that quality, the farmer will get higher price. Now everything is mixed, and it is going to the market. So there is no gradation, there is no standardization, there is no quality control. And let me tell you, these three laws will not restrict the farmers only to do farming. The farmers will get an opportunity of becoming an entrepreneur. Now, Dr. Patjoshi tell the farmer should be recognized as a skilled worker. Why skilled worker? He, under the new law, he is going to have an opportunity of becoming an entrepreneur. And now that's a big change which is going to happen. And with the package of the 1.65 lakh crore for agri infrastructure fund, and also so many other changes like 10,000 FPOs which government has announced, these are going to again give more opportunities to the farmers to really come up. And you will find that the rural countryside will be vibrant with action. They will have more income. There will be more demand, and then only the country can leap forward. And it is not agriculture leaping forward. It is the whole country is going to leap forward, and will become the biggest agricultural power in the world. Why I say this? Today, our food production next year will be more than 300 million tons. Our horticulture production will be 310 million tons. Now, we don't consume so much in our own country. What we are short at today is only in edible oil. We were having self-sufficiency in all the food grains, including pulses. Today, we are self-sufficient. Only in edible oils we are shortage, and therefore mission oil seeds has been just launched. But if proper approach is done, even in oil seed also we will be surplus, and we will become the granary of the world, and we can also influence international relation through our production. This is my vision for the country. I am certain this is going to achieve in the next 5 years or so, or may not be in 5 years, maybe 7 to 8 years. This is the by 2030, when the the development goals, we are supposed, I think India will be a prime agricultural power in the whole of the world. With these remarks, I end my talk here. I'm really grateful for giving me an opportunity to address a galaxy of eminent people on this occasion. Thank you once again. Jai Hind. Thank you, Dr. Patnaik, for giving a very nice and a detailed analysis of all the three laws that have been incorporated in the farm law. And specifically, it is very much enlightened to know that the farmer will become entrepreneur, and it is not a simple skill laborer sort of thing, and a skill laborer plus, which is an entrepreneur. And apart from that, the information about the contract farming is also a new addition to the information that has been given to this audience. There is a reference price and the fixed price. Probably that concept of pricing and linking it to the market phenomenon will definitely make the farmer rich in the long run, as well as the essential commodity definition and its reorientation
will create a big change in the philosophy of farm product and its related market. Now we have with us another eminent speaker also, our brother or bhai, whatever you bhai in the Oriya, Mananiya Mohini Mohan Mishra ji. He is I'm speaking in English again because there are many non-Oriyas in this audience. So he basically is the National Secretary of Bharatiya Kisan Sangh. He is by education a MSc in agriculture, holding also the gold medal then at that time from his MSc background. He has done his LLB in policy intervention with Government of India. He is a socialistic activities person, and he has done lot of societal work during his the time period, and he has also acted consultant to USA in many activities. Particularly in 2016, he was very much involved in those consultant activities with United States. With this basic introduction, now I request Mohini Mohan Mishra ji to deliver his thinking and speech in this area of new farm law. Over to Mohini Mohan Mishra. नमस्कार। नमस्कार। मेरे यूनिवर्सिटी के VC भी यहाँ है, मेरे पूर्व कृषि मंत्रालय के सचिव भी है पारजोशी बाबू। समस्तों को नमस्कार। किसी विषय आई डिसएग्री विथ मिस्टर संग्राम पटनायक स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। उन्होंने जो बताया जॉन एफ कैनेडी क्या बोले थे, भारत अमेरिका में क्या है मेरे को पता नहीं। भारत में चासी इज परचेजिंग ऑल इनपुट्स विथ MRP विथ GST and selling with MSP, minimum support price, without input credit. That is the whole story. किसान को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है और MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस में खरीद करके MSP में बेचता है, वो भी नहीं चलता है। अभी सरकार के सारे मंत्री घूम कर, यहाँ भी सचिव, वहाँ भी पारदर्शी बाबू, वो भी बोल रहे हैं MSP चलेगा। शायद हम लोगों को पता नहीं, MSP में ना मंडी के अंदर खरीदा जाता है ना मंडी के बाहर, घोषणा होती है कागज में, यहाँ तक ठीक है। जब हम 3 बिल के बारे में बात करते हैं तो भारत के कृषि के बारे में बात करना चाहिए। पारजोशी बाबू एंड शोभन बाबू जो बताए, उन्होंने सही बताया, आई एग्री विद देम। दिस बिल आर ओनली फॉर द ट्रेडर्स। उन्होंने जो बताया व्यापारी लोग कैसे व्यापार होगा, व्यापारी कैसे आएंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, वो बताया। आई एग्री विद देम। दिस आर द बिल्स फॉर द ट्रेडर्स। दोनों ने बताए, दोनों एक्सपर्ट्स है, बहुत आंकड़े भी होगा। हमारा भारत कृषि में आत्मनिर्भर है 100%, आई एग्री विद देम, बट फार्मर आत्मनिर्भर है नहीं। किसान के बारे में ये बिल क्या कहता है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहिए। कितना प्रोडक्शन होता है हॉर्टिकल्चर का और आगे भी बढ़ेगा, कितना धान होता है सब पता है। यद्यपि किसान के पास उनका बीज नहीं है, खाद नहीं है, 250 जिले को छोड़ के बाकी जिला में फर्टिलाइजर नहीं मिलता है। सरकार के फसल बीमा के बारे में बताया, पेनिट्रेशन होना चाहिए, किसान आना चाहिए। सरकार ये जो फर्टिलाइजर सब्सिडी और जो प्रीमियम दे 95% व 97% प्रीमियम दे रहे हैं, ये कंपनी चलाने के लिए दे रहे हैं, किसान को नहीं दे रहे हैं। किसान के पास कुछ नहीं आता है। जैसे मैंने खाद में व्यवहार कर रहा हूँ मेरे खेत में, तो मेरे को सब्सिडी नहीं मिलता है। मैं इंश्योरेंस नहीं किया तो मेरे को प्रीमियम, मेरे को मतलब नहीं फसल बीमा का प्रीमियम है।
ये सारी चीज जितना सरकार दे रहा है पहले से आज भी, वो व्यापारी लोगों को, कंपनी को दे रहा है। दूसरा विषय, हमारे देश में 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, अलग अलग फसल होते हैं। यहाँ पारदर्शी बाबू किसान को स्किल लेबर करने की मुहिम छड़ी, अच्छी बात है। किसान को स्किल लेबर बनाइए। किसान किसान भी है, किसान लेबर भी है, किसान ट्रेडर भी है, किसान कंज्यूमर भी है। ये देश के शासन को समझना पड़ेगा। ये नहीं समझेंगे तो आपका कानून में क्या समस्या है वो समझ में नहीं आएगा। जब आप एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से किसी जिनिस को निकालते हैं, किसी जिनिस आजकल एसेंशियल कमोडिटी नहीं है ऐसा करके सरकार ने घोषणा किया, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त उपज है। आई एग्री विद दैट। हम सहमत है कि बहुत किसानों ने, उनके पास कुछ नहीं होते हुए भी, ना पानी, ना बीज, ना खाद, ना बैल, ना ट्रैक्टर, कुछ नहीं होते हुए भी किसानों ने हम सबको खिलाया। और अगर ये एसेंशियल नहीं है तो कोरोना में एसेंशियलिटी इसका प्रूव्ड है। तो इसको अगर एसेंशियल कम्युनिटी में हटाया गया, व्यापारियों को जो बताए शोभन जी और पारदर्शी बाबू बताए, इसलिए इसको एसेंशियल कम्युनिटी से हटाया गया, क्योंकि व्यापारी उसको जितना चाहे इतना महदूद कर सकते हैं। हमको कोई आपत्ति नहीं है, करे, महदूद करे, मगर उसके बाद जो प्राइस राइज होगा, आप लोग तो लाखों कमाते हो, आप दे सकते हो, दे देंगे आप लोग। कोई वकील है, कोई IAS अफसर है, कोई बाकी IT इंजीनियर से, आप दे सकते हो, कोई समस्या नहीं है आपको। मगर किसान जो प्रोड्यूसर भी है, वो कंज्यूमर भी, आलू बेचता है, प्याज खरीदता है, अगर प्राइस राइज एक्सेसिव होगा तो किसान ही मरेगा। इसलिए वो विषय को सरकार को एड्रेस करना पड़ेगा। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पे कितना बढ़ सकता है प्राइस, और कितना उसको किसान कितना झेल सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत दिन से चल रहा था। उसके ऊपर कानून बनने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे ऑब्जेक्शन किए थे। एक अच्छी बात सरकार ने किया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। वी वेलकम दैट। किसी भी स्थिति में जमीन को कोई नहीं ले सकता। इट हैज बीन देयर इन द एक्ट, ये जो बना कानून में, बहुत अच्छी बात है। हम उसको तहे दिल से स्वागत करते हैं, खुशी से स्वागत करते हैं। मगर जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ दोनों बड़े वरिष्ठ अधिकारी है, सरकार को ये थोड़ा समझाए। सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं वहाँ कानून बनाते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो आके करेगा किसान के साथ, वो क्या करता है, मैं आपको बीज दूंगा, मैं आपको फर्टिलाइजर दूंगा, मैं आपको ट्रैक्टर का दे दूंगा, वो ये दे दूंगा। आखिर में आपका एग्रीमेंट है 20 रुपए में टमाटर खरीदेंगे, जैसे शोभन जी बताए, वो सही बात है, अच्छा प्राइस मिल सकता है, संभावना है, वी एक्सपेक्ट दैट। मगर वो जो इनपुट दे देगा किसानों को, कुछ पैसा भी दे देगा, और आखिर में हिसाब लगाया, तुम तो ज्यादा ले लिया मेरे से, ये फसल मेरे को ऐसे ही दे दो, क्या करेगा किसान? तब हम मांग करते हैं सरकार को, ये सारे जितने इनपुट्स है उसका फीचर्स, सारे लोग अभी ये IT इंजीनियर्स बैठे हैं, हम मोबाइल खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, उनका फीचर सर्च करते हैं, जितने इनपुट्स उसका फीचर्स, उनका प्राइस, उनका अवेलेबिलिटी, ये तो पब्लिक डोमेन में पहले डालो, तो किसान को पता लगे ये जो खाद मेरे को दे रहा है, जो ट्रैक्टर का किराया दे रहा है, या बाकी और कुछ इनपुट दे रहा है, उसका कीमत क्या है, उसका फीचर क्या है। ट्रैक्टर अलग अलग प्रांत के स्टेट के लिए, अलग अलग जोन के लिए अलग अलग पावर का ट्रैक्टर चलेगा, वो भी एक विषय है। वो विषय में इसलिए उसका फीचर चाहिए, उसका प्राइस चाहिए, उसका अवेलेबिलिटी चाहिए, ये भी सरकार को देना पड़ेगा। हम कानून को स्वागत करते हैं, पर उसमें ये जो गली माने ये है लूप होल से, उसको करेक्ट सरकार को करना पड़ेगा। अभी क्या समस्या है देश में, चाषी को, किसानों को सबके साथ लड़ाया गया। चाषी के साथ श्रमिकों को लड़ा देना, चाषी के साथ व्यापारी को लड़ा देना, चाषी के साथ सरकारी कर्मचारी को लड़ा देना, और चाषी किसान अगर आता है उनको आखिर में भी बोलने को देना, यहाँ सेमिनार में भी, वेबिनार में भी, जस्ट फॉर जोकिंग। तो किसानों का स्थिति क्या है, सरकार सारे कानून में बोलते हैं, अगर कोई गड़बड़ हुआ, कोई कंपनी कुछ इधर उधर करके गया, तो किसान जाएगा सब कलेक्टर के पास, कलेक्टर के पास। आपको पता है क्या, आज भी किसान को सब कलेक्टर के बरामदा में घुसने की अनुमति नहीं है। अंदाज नहीं है कि हम लोगों को, उनका पियन बोलता है, कौन है तुम, भागो यहाँ से, वो पेड़ के पास बैठो, बुलाता हूँ। शाम को आके हाथ जोड़ के बोलेगा, बाबूजी थोड़ा मिलना है, अरे कल आ जाओ, परसों आ जाओ, और वो जाके
कंपनी के खिलाफ सब लोग को बोलेगा, सब लोग उनका बात मानेगा, सॉल्व करके डिसीजन सॉल्व करेगा। क्या बात हो रहा है? तो इसीलिए अगर देरी लगे, सरकार तो कोई किसान न्याय की प्रक्रिया शुरू करे। जैसे लेबर ये कोर्स है, इसे किसान लाया तो एक प्रक्रिया कम से कम शुरू करे और उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसका समाधान हो, उसका तो डेजिग्नेट करे सरकार। आखिर का जो हमारे पास जो आया जो ट्रेड बिल, तीनों बिल आप पढ़ लीजिए ना, तीनों पढ़ा गया, आप पढ़ लीजिए। ये सीधे सीधे व्यापारियों के लिए बनाया गया, कहीं किसान नहीं है उसमें। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट व्यापारियों के लिए फ्री, जितना होर्डिंग करो करो, जितना प्राइस बढ़ाना बढ़ाओ। वहां किसान कहाँ है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सारी सारी दे दिए, उनका पावर कॉन्ट्रैक्टर के हाथ, वो ये देगा वो देगा वो देगा, वो बार्गेन करेगा। बार्गेन पावर किसके हाथ कितना है? इसीलिए बाकी जो ट्रेडर बिल है, ट्रेडर बिल में हमने जो लड़ाई लड़ते, मैं जब उड़ीसा में किसान संघ का काम शुरू किया, मेरा पहला आंदोलन में रेढ़ाखोल में किया था। उस समय की महिला थी वहां, वीडियो बड़ा रैली की थी हमने। क्या इश्यू था? जो हाथ में लेकर एक टोकरी का सब्जी बेचता है जो महिला, वो 25 पैसा था, उनको 50 पैसा बढ़ाया गया। सारी यहाँ इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, मेरा एक विनती है, दुनिया में कहीं भी बता दो जो बेचता है वो टैक्स देता है, कहीं भी किसी भी चीज का। और ये एक ही भारत में है जो किसान जहां जाता है, मंडी हो, मंडी के बाहर हो, हाट हो, कहीं भी वो बेचता है, वो टैक्स भी देता है। सिर्फ टैक्स नहीं देता है। हम लोग सब जब क्या करते हैं, अरे भाई बैगन कितना का है? 40 रुपया, 30 ले लो ना। नहीं जी बाबूजी नहीं होगा। अरे 1 किलो ले लूंगा, ठीक है, और जी 35 दे दीजिए। और 35 रुपया में बैगन खरीदने के बाद हम फिर बैग दिखाएंगे, थोड़ा धनिया डाल दो, थोड़ा मिर्ची डाल दो, और उसके बाद हाट में एक टोकरी सब्जी बेचने के लिए 50 पैसा टैक्स, मंडी में आरती टैक्स, मंडी में और सारी यूजेस टैक्स। दुनिया में कहीं भी जो बेचता है टैक्स देता है क्या? हम ये विषय को लेकर अलग अलग स्टेट में जिनका जो मार्केटिंग कॉर्पोरेशन है, सारी ऑफिसर्स है, मुख्यमंत्री है, वहां तक देश के अर्थ मंत्री तक ये बात को उठाया। हाँ गलत तो हो रहा है, गलत तो हो रहा है, बंद क्यों नहीं हो रहा है? चलो अच्छी बात है, सरकार ने ये ट्रेडर फैसिलिटेशन बिल के नाम पर उसको हटाने की कोशिश की। एपीएमसी एक्ट में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता है केंद्र, हम जानते हैं, ये राज्य सरकार का विषय है। इसलिए एपीएमसी में जो लूट हो रहा था, जो टॉर्चर हो रहे किसान, हम सब कहानी जानते हैं, बोलने का जरूरत नहीं है। इसलिए सरकार को धन्यवाद, उन्होंने टैक्स फ्री मार्केटिंग के लिए सब किसानों को अनुमति दे दी, कहीं भी बेचो, टैक्स फ्री बेचो। दूसरी विषय क्या है? वन इंडिया वन मार्केट, वी वेलकम दैट। सब कुछ कोई भी कहीं बेच सकता था, किसान के लिए रेस्ट्रिक्शन था। यहाँ केरल में 3000 रुपया धान का क्विंटल बिक रहा है, उड़ीसा में 1800 रुपया जो बता रहे थे। यहाँ FAQ मान 17% मॉइस्चर ऑफिसर है, ठीक है, बता दिया, आपको कोई लगता नहीं है इसमें। मेरे घर से 75 क्विंटल धान हम बेचते हैं, आपको पता है कितना पैसा काट लेता है वहां मिलर? तो कोई टेस्टिंग नहीं है। अगर इतना है व्यवस्था, सरकार तो टेस्ट कर ले FAQ हिसाब से, अगर गलत है हमको बता दे, ये करके अगली बार आओ, हमको पूरा पैसा मिलेगा। देश में कहीं भी मंडी में, उड़ीसा का था छोड़ दीजिए, उड़ीसा में 2-3 दिन तो खरीदार नहीं होता है, कहीं भी MSP पे खरीदा नहीं जाता है, ना मंडी में ना बाहर। तो इसलिए वन इंडिया वन मार्केट को हम स्वागत करते हैं, टैक्स फ्री मार्केटिंग को हम स्वागत करते हैं। हम इस तीनों बिल को, सरकार का जो वंश है उसको पूरा 100% वेलकम करते हैं। मगर अगर कोई गड्ढे है उसमें, उसको भरना ही पड़ेगा सरकार को, नहीं तो ये शुद्ध रूप से तीनों बिल व्यापारियों के लिए ही तो बोल दे। हम व्यापारियों के लिए बिल बनाया, उसमें अगर किसान को कुछ फायदा हो गया। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं सब ऑर्गेनाइजर से लेकर स्पीकर तक, हम जैसे किसानों को कृपा करते हैं, दया करते हैं, थोड़ा दे दिया, ये कम से कम ये गलती ना हो हम लोगों से माध्यम से।
अगर कल किसान खेती छोड़ दिया, हमारा तनख्वाह हमारा जेब में रह जाएगा, भूखे मर जाएंगे। किसान हमको उनका प्रॉफिटेबल प्राइस के बगैर भी हमको खाना खिलाता है। वो खेती नहीं छोड़ा, कुछ नहीं उनके पास। सब्सिडी के नाम पर, फसल बीमा के नाम पर सरकार कंपनी चला रहा है, किसान को नहीं दे रहा है। पहली बार देश में, तो बार बार उल्लेख हुआ, पहली बार देश में सरकार ने किसान सम्मान निधि के नाम पर 6,000 रुपया दिया है, पहली बार। सैल्यूट सरकार को। हमने मांग की थी सरकार को, जब ऋण माफी का जोर पकड़ा, देश में 90% किसान ऋण नहीं कर, कर्जा नहीं लेते हैं, वो कर्जा करते हैं तो वापिस करते हैं। 10% लोगों को थोड़ा तकलीफ है, उनके लिए करो, आपत्ति नहीं, मगर कर्जा माफी के नाम पर बैंक को चलाना, ये कौन सा युक्ति हमको पता नहीं। इसलिए अगर आपको किसानों को सहायता करना है, किसानों को खाते में सीधे दे दो। हमने करीब 500 जिला में आंदोलन छेड़ा, चलो अच्छी बात है, सरकार ने उसको स्वीकार की, और 5,000 6,000 रुपया जैसे कोई क्या फेंकते हैं रोटी, ऐसे दे दिए। तो पहले तय हुआ था, तत्कालीन वित्त मंत्री बोले थे नहीं इसको बढ़ाएंगे, कब बढ़ेगा पता नहीं। अभी यहाँ 22,000 25,000 नहीं, अपने शायद परजोशी बाबू बोले थे 22,000 ग्रामीण हाट के लिए बात हुआ था। 2017-18 बजट में 2,000 करोड़ रुपया का कॉर्पस फंड निश्चित है। पिछली बार जब अर्थ मंत्री के साथ बात हुआ, बोले कि मुझे पता नहीं, देश चल रहा है। हम बार बार बोल रहे हैं, आपको कोई चिंता की बात नहीं, ये 22,000 हाट को आपने इम्प्रोवाइज कर दीजिए, किसान वहीं अपना सामान बेचेगा, वहीं से अपना सामान खरीदेगा, घर आ जाएगा। किसान बार बार ब्लॉक हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं जा सकता। छोटे किसान है, जो बताया आप लोगों ने चर्चा भी की, अपने दो स्पीकर वो बताया, छोटे किसान है, 90% छोटे किसान है, उनके पास 100 क्विंटल का सामान नहीं होता है, ट्रक लोड कर नहीं जाएगा। जो व्यापारी आता है वही हाट पे खड़े हो जाए, 10-50 किसान को खरीद करके चले जाए, वहां के नोटिस बोर्ड लग जाए, कीमत इतना है, इससे कम नहीं खरीदा जाए। तो ये छोटा सा इम्प्रोवाइजेशन जरूरी है, अगर सरकार चाहता है किसान का भला करना। हम सब जो चर्चा कर रहे हैं, व्यापारी का भला हो, उससे अगर बाई प्रोडक्ट के हिसाब से किसान को थोड़ा मिल गया तो बेचारा किसान बच गया। ये जो कंसेप्शन और परसेप्शन ये गलत है। हम आंदोलन में जो कर रहे हैं उसके पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। हम 4 सुधार मांग करते हैं सरकार को। ऑर्डिनेंस के समय विषय रखा सरकार के सामने, ऑर्डिनेंस के बाद भी अभी रख रहे हैं। मैं परसों कोटा में मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूं, सारे मीडिया में आया है विषय। एक तो जितने ट्रेडर खरीदेंगे, बहुत मैंने अंदर घुसना नहीं चाहता हूं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा काफी लोगों को। जो ट्रेडर खरीद कर आएगा, पैन कार्ड दिखाएगा आएगा, 50 किसान से खरीदा, किसान को दे देंगे, अकाउंट नंबर दे दो, वो भाग गया, क्या करेगा किसान? इसलिए हम मांग करते हैं सीधे हिसाब। मैं किसान हूं, मैं उड़ीसा का 15,000 गांव स्वयं घुमा हूं, देश भर में 1 लाख का गांव में घुमा हूं, मैं जानता हूं किसान की स्थिति। तो मेरा विचार है, अगर कोई ट्रेडर व्यापार करने का आता है, उनका नाम एक पोर्टल के अंदर, अभी परसों ही कौन सा फेक यूनिवर्सिटी सरकार ने डिक्टेट कर दिया। कैसे किया? क्योंकि सॉफ्टवेयर जारी करके एक पोर्टल के अंदर रजिस्टर जो यूनिवर्सिटी फेक नहीं, उसका नाम डाला, 23 यूनिवर्सिटी फेक निकल गए। हम चाहते हैं ऐसा किसान के साथ जो व्यापार करने का आएगा, उनका नाम तो पोर्टल में डाल दो। क्या समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है। जिद पकड़ के रखे हैं सरकार विपक्ष, ये दोनों, ये सरकार और विपक्ष दोनों जिद पकड़ के रखे, और किसान का कोई हित नहीं चाहता है। दोनों के कारण किसान का हित हो रहा है। ये सारी जो व्यापारी ट्रेडर करने के लिए आएंगे, उसका नाम एक पोर्टल के अंदर डाल दो, नंबर 1। नंबर 2, ये जो लोग पैसा, ये चिटफंड जैसा स्कैम ना हो, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, चिटफंड जैसा स्कैम ना हो, भाग न जाए कंपनी। उड़ीसा से 22 कंपनियां करोड़ रुपया खा के भाग गए, पता नहीं कहाँ है। ऐसे ये व्यापारी जो आएंगे किसान से खरीदने के लिए, शाम को दे देंगे, कल 72 घंटा का मोहलत दिया गया, तो आराम से भाग जाएगा। हम मांग करते हैं उसका कोई बैंक गारंटी कर दो। जो लाखों करोड़ का व्यापार करेगा, बैंक का गारंटी कर दे, अगर वो भाग गया किसान को पैसा मिल जाए। इतने विषय है। और तीसरा विषय जो हम चाहते हैं, तीसरा जो विषय है हमारा,
देश भर में हम तो एमएसपी घोषणा कर दी 23 फसल की, गन्ना का वो विषय रख दिए हमारा अपने पारदर्शी बाबू। गन्ने में कितने हजार करोड़ रुपया खा लिए हैं, पड़ा किसान को नहीं मिला है, शायद लाटेस्ट 22,000 करोड़ ऐसा कुछ होगा। एग्जैक्टली आई डोंट नो, हर रोज बदलता है। अगर किसान का पैसा गन्ना खरीद करके किसान के जो गन्ना मालिक मिल मालिक पैसा नहीं दे रहा, वो जेल के अंदर क्यों नहीं है? क्या चल रहा है? ऐसा अगर लाखों किसानों से धान खरीद करके टमाटर खरीद करके भाग गया तो क्या करेगा किसान? गन्ना किसान तो बहुत मजबूत किसान है, पैसा भी है, गाड़ी भी है, वो लौट नहीं पा रहे हैं, बेचारा छोटा किसान क्या करेगा? इसलिए कोई गारंटी हो, अगर कोई गड़बड़ करता है 72 घंटे के अंदर पैसा नहीं मिलता है तो पैसा उनके अकाउंट में आ जाए। तीसरी विषय है, कम से कम इतना तो निश्चित कर दे, अभी तक नहीं है, यह मानते हैं। जैसे मैंने बताया कि किसान सम्मान निधि एक बढ़िया कदम है, इसके कारण आत्महत्या ही रुक गया काफी। 1,000-2,000 रुपए के लिए किसान आत्महत्या करता था, किसान को लगा कि नहीं आएगा, पैसा आएगा, ये विश्वास साथ बैठा है, तो आत्महत्या कम होने का संभावना बढ़ गया है। इसलिए किसानों को सहायता करने का चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो एमएसपी, जैसे आपने किसान सम्मान निधि को पहली बार किया, जैसे आपने एपीएमसी एक्ट में बदलाव राज्य सरकार नहीं किए, इसलिए आपने ट्रेड के लिए एक अलग कानून सेंटर के ओर से ले आया, अच्छी कदम है, मगर उसमें तो कर दो, ना मंडी के अंदर ना मंडी के बाहर बिलो एमएसपी खरीदारी ना हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बासमती का हो, सेंट्रेड राइस का हो, कोई भी फसल का हो, कितने एग्रीमेंट होगा? कम से कम कोई राडर तो लगे। एमएसपी जो सरकार, वो एमएसपी तो बहुत कम है। हम तो प्रॉफिटेबल प्राइस का मांग के लिए पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं। अच्छा बात है, सरकार एमएसपी बढ़ा रहा है, प्रॉफिटेबल की प्राइस को और जा रहा है। कम से कम ये तो वहां लिख दे एक लाइन, एमएसपी के नीचे खरीदारी ना हो, इतना ही विषय है। कानून बढ़िया है, आंख बन गया, बढ़िया है, हम उसको स्वागत भी करते हैं। जैसे हम बताते हैं यहाँ रास्ता बढ़िया है, 2-3 गड्ढे हैं, उसको भर दो, इतना ही विषय है। क्योंकि ये सारे तीनों बिल व्यापारियों के लिए ही बनाया गया। इसमें बाई प्रोडक्ट के हिसाब से किसान को कुछ मिल जाए ऐसा लोग कल्पना करते हैं। इसी के लिए अगर उसको सिक्योर करना, इसलिए 4 मांग को आपको देखना पड़ेगा। एक तो ट्रेडर का, आपको आश्चर्य होगा, एक बिल में अभी तो वो सुधार हो गया है, एक बिल में किसान का जो डेफिनेशन दिया गया था उसमें कॉर्पोरेट हाउस में वो बन सकता है किसान, ऐसा बनाया गया था। चलो वो मांग के कारण, ऑर्डिनेंस के समय हम मांग के कारण उसको बदल हो गया है, धन्यवाद सरकार को। इसलिए ये जो 3 कानून है, एक तो ट्रेडर बिल है, ट्रेडर फैसिलिटेशन बोलते हैं, वो ट्रेडर के लिए है। एसेंशियल कमोडिटी 100% ट्रेडर के लिए, व्यापारियों के लिए खुली छूट है, हमको कोई आपत्ति नहीं है वो 1 लाख टन मौजूद करे, 2 लाख टन करे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, मगर हमारा सुरक्षा होना चाहिए उसमें से, क्योंकि हम भी उपभोक्ता है। तीसरी विषय, यहाँ जो अपने शोभन जी बताए कि एडिबल ऑयल देश में शॉर्टेज है, ये बहुत बड़ा गोलमाल वाला विषय है, अंदर में नहीं जाऊंगा, मैंने इतना बोल दें, उन्होंने कोशिश किए थे, शोभन बाबू को थैंक यू, व्हाट्सअप, उन्होंने दाल के लिए बताया, सरकार से साथ बात की, 5,000 रुपया कर दो एमएसपी, किसान 1 साल में भर दिया गोदाम। वो कोई जरूरत नहीं है, आप एमएसपी थोड़ा बढ़ा दो, खरीदार की व्यवस्था कर दो, बाकी सारी चीज देश का भंडार भर देंगे हम। इतना ताकत भारत किसान के पास है, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको एक प्राइस दे दीजिए और खरीदारी की व्यवस्था कर दीजिए। इसलिए ये तीनों बिल को स्वागत करते हुए, इसमें जो खामियां है, जो ऑयल सीड का बात है, उसमें भी बैठे हैं बड़े बड़े लोग, सरकार को बोल दे, ऑयल सीड का जो उपज करता है किसान, उसका थोड़ा एमएसपी घोषणा कर दे बड़े अच्छा, और खरीदार की व्यवस्था कर दे, 1 साल में हम सेल्फ सस्टेन हो जाएंगे, जितना एक्सपोर्ट करना है करो। इधर एक्सपोर्ट चल रहा है, उधर मक्का का इंपोर्ट भी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हमारा नवरंगपुर का किसान परेशान है, मक्का के लिए बेचने के लिए, यहाँ मक्का भी इंपोर्ट हो गया। चलो वो एक सरकार का WTO का बात कर रहे हैं, WTO है कहाँ, ये साइन बोर्ड है, क्यों उसका बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। WTO खत्म हो गया, हमारे दिल में बैठा है, WTO चला रहे हैं हम, निकालो WTO से, हम निकल कर आ जाओ, कोई मतलब नहीं। इंडिया इज ए मार्केट इटसेल्फ,
तो इसीलिए ये जो विषय है, ये विषय पर थोड़ा गंभीरता से सोचना पड़ेगा। सरकार जो ये जो बिल आया है, हम उसको स्वागत भी करते हैं, मगर उसमें जो कमियां हैं उसको भी हम चाहते हैं सरकार उसका सुधार कर ले, तब जाके ये किसान के पक्ष में होगा। नहीं तो ये व्यापारी बिल है, ठीक है, व्यापारियों के लिए बोला, इतना खुल के बोल दे सरकार, हम व्यापारियों फैसिलिटेशन के लिए बनाया, थैंक यू। किसान ऐसे ही बैठा है, 50 साल 60 साल हो गया। बाकी ये सारी विषय उसमें सरकार के पास पहुंच जाए कि इसमें सुधार हो जाए तो किसान को भला होगा। किसान को भला होगा नहीं, किसान का कर दर हम लोग है, थोड़ा ऋण मुक्ति हमको मिलेगा। जो हमको आज तक उनको भूखा रह तो हमको खिला रहा है, हमको जिंदा रखा है, अगर उनको जैसे सरकार ने, मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, सरकार ने इसको जो 6,000 रुपया दिया उसको कोई सब्सिडी नहीं बोला, किसान को सम्मान के साथ दे रहा है सरकार। थैंक यू व्हाट्सअप टू मोदी। इसलिए ये नामकरण भी बहुत मायने करता है, सम्मान। इसी सम्मान के साथ अगर हम सब लोग विचार करेंगे, क्योंकि अगर किसान किसी दिन, मैं उसका आंदोलन में भागी हूं, मोहन राव जानते होंगे, पार्थिव साहब जानते होंगे, आंध्र प्रदेश में हमने 1 लाख हेक्टेयर में फसल का हॉलिडे घोषणा कर दिए थे। आई वॉज द लीडर। विपक्ष के नेता पहुंच गए अपने विपक्ष नेता नेतृत्व करके, फिर बात हुआ मेरे से, बोले खरीदार तो धान तो खरीद लो कम से कम। वो आंध्र का एक मुख्यमंत्री मर गया, दूसरा मुख्यमंत्री आया नहीं था, उस समय ये गड़बड़ चला, कोई खरीद नहीं रहा है। हमारा मुख्यमंत्री कौन गया, चिंतित यार, धान तो खरीद लो किसान के घर से। इसलिए ये जो समस्या है इसको थोड़ा एड्रेस करना पड़ेगा। सरकार संवेदन है, हम जानते हैं किसान के लिए, इसलिए सरकार को आखिर ये भी मांग करते हैं यही फोरम के माध्यम से कि सरकार ये 4 जो हम मांग करते हैं उसका सुधार कर दे, तब किसान का थोड़ा भला होगा। जैसे आप सोच रहे हैं डबल इनकम भी डबल हो जाएगा या और कुछ होगा, जो होगा, इसलिए वो विषय में थोड़ा सुधार होना चाहिए। इसी के साथ मैं मेरा वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद मोहिनी मोहन मिश्रा जी। एंड बहुत बढ़िया आप एक सोसाइटल पर्सपेक्टिव किसान के लिए रखे। एंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडर एंड फार्मर, you could make a line, and that is a very interesting thing that has been come across. And one very important point that you have raised is the help of IT infrastructure to make as far as possible the system more transparent and more visible to the outside world. And ये definitely एक helpful चीज है कंट्री के लिए, एंड ये बहुत हेल्प करेगा टू मेक द थिंग्स मोर ट्रांसपेरेंट सो दैट किसान के बेनिफिट में जाएगा। एंड डेफिनेटली ट्रेडर एक बीच में तो रहेगा, बिकॉज किसान खुद अपने आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाएगा, एक मार्केट हमको क्रिएट करना पड़ेगा। वो मार्केट ग्लोबल मार्केट होगा या लोकल मार्केट होगा, और ए मिक्सचर ऑफ लोकल एंड ग्लोबल होगा। वो तो लॉन्ग रन में जैसे चीज चलेगा ऐसे ऐसे वो इवॉल्व होते होते जाएगा। एंड वी ऑल नो दैट आवर सोसाइटी इज ए इवॉल्विंग सोसाइटी, एंड फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड वी विल गो टुवर्ड्स ए डेवलप्ड वर्ल्ड। नाउ हमारे पास काफी सारा क्वेश्चन आ गया है इन द मीन टाइम, एंड वो क्वेश्चन आंसर का थोड़ा हम अभी लेट अस हैंडल दैट क्वेश्चन आंसर टू सम एक्सटेंट व्हाट एवर पॉसिबल। एंड मैं एक एक करके जो हमारा क्वेश्चन पूछने वाले हैं उनको बुलाऊंगा, एंड वो डायरेक्टली उनका क्वेश्चन हमारा पैनल को पुट फोर्थ करेंगे। हमारे साथ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम DP Kar, who is a managing trustee of ADIRE Smart Village, and the question looks to me probably to Patjoshi Babu. Will Panchayat collaborate with NGO like us to coordinate smart village component
for a rapid development of micro enterprise and green infra based on solar energy. He probably requires directly some feedback from Dr. Patjoshi regarding the Panchayat involvement in this aspect. Namaskar. Very good question. Actually, there is a lot of funding going to Panchayat under 14 Finance Commission also. Now 15 Finance Commission interim report, and next year onward the full-fledged 15 Finance Commission. The Panchayat mandate has been there. Basic infrastructure and basic services in the Panchayat level. Panchayat may be one village or more than one village, depending on the population size. And the street lighting is one of the components for the basic services in the Panchayat now, in all villages. That's already targeted. के रिक्वेस्ट करी डॉक्टर कौर को टिके वीडियो रे ऑन कर दियो टिके कर प्लीज वो वीडियो टा बर्तन नमस्कार नमस्कार मु डॉक्टर कौर कहूची हां मु टिके वीडियो देइनी एबे मोर एटी नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत कम गारू कहूची हमर तो गोटे गां सालेपुर रे गोटे स्मार्ट विलेज करूछु आज्ञा से तो मु कहूची से जियो रो नेटवर्क इज नॉट वेरी स्ट्रांग से मु वीडियो दोनी ऑडियो रे कथा कहूची केतेबेले गोटे मो चांस पाइला आई गिव ए प्रेजेंटेशन ऑन दिस एबे से जो पंचायत कथा उठला बे सेथरे मु चाहूतली हमर पंचायत सरपंच को सहित कथा होतली केना आमे जो प्रोग्राम करूछु सेटा गुडा प्रोग्राम तादरे ऑलरेडी गवर्नमेंट रे अछि आमे ताकू केते जगह रे डुप्लीकेट करछु केते जगह रे जोडी गरीब लोक माने पाउनांती चांस सेठी आमे ताकू सर्विसटा दउछु जोडे लूप ये रही छी क्रैक्स रही छी से क्रैक्स को फिल करछु सेते आमे सब करछु मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगे करछु जोडा कि आपनकर सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेंटा जदी टिके पिन पॉइंट करी कि पाटजोशी सान को पचारंते ताहले टाइम पॉइंट ऑफ व्यू रे एटा पचरा चाहू छी कने हमर पंचायत हमर गोटे मेजर प्रॉब्लम हो छी जारे पानी इरिगेशन वाटर ड्रिंकिंग वाटर बाथ वाटर एसो पाई सेतरे मु देखली पंचायत रो गोटे 4-5 कोटी टका खर्च होई गोटे सिस्टम करा ही छी जोतरे कि पानी सप्लाई करा जिवो किंतु सेते गोटे यूजर फी दबाक पडुची बोली के गां लोक ताको यूज करनांती सेटा भांगिया बसलानी मिसयूज अनयूज ही पड़ी छी हमें गोटे प्राइवेट हमर गोटे ट्रस्ट तरफ गोटे कलु वाटर सप्लाई सिस्टम सोलर पर सेतिर मध्ये लोक पैसा मागिलाटू से माने बहुत नाराज होछन आगी होछन जे काई पैसा काई मगा होची यूजर फी काई मगा होची पानी बिकुच गाड़ी दोछंती सितले कोड केस भी हेची पूरा पुलिस केस काले हेची तेनु एई सब दृष्टि देखि गोटे कोऑर्डिनेशन करिया को पड़िबो जेंते गवर्नमेंट रो डिफरेंट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आउ जते सब अछंती इवन लॉ एंड ऑर्डर एको सब मिसे के नकले इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क एनजीओस आउ गार सब जिंस गवर्नमेंट जेतु फ्री रे दउची सेठी आपण यूजर फी लगेवा वेरी डिफिकल्ट विदाउट यूजर फी कैन नॉट बी मेंटेन सेठी पई ट्रेनिंग हमें चाहू कि स्मार्ट विलेज जते फीचर्स अछि लाइक सोलर आपनकर ऑर्गेनिक फार्मिंग तारे डिफरेंट फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग आइटम्स आकु जो ट्रेनिंग दवा पई गवर्नमेंट गोटे हमको एमएसएमई तरफ गोटे 50 लाख ग्रांट दे जी कि तारे से कहउजन जे तुम ट्रेनिंग एक्सपेंस गुडा सब लोकन ठारू नियो गां लोकन ठारू हमें गुडा माइग्रेंट लेके तांको ट्रेनिंग दो बोली किंतु केमती ट्रेनिंग दवा पंचायत रो किछि प्रोग्राम अछि जोथरे कि से माने फी गुडा को पे करि परिबे जे ट्रेनिंग दवा पई आसीबो बाहरु नल तो गां लोक बाडे Thank you for question. I'll attempt karibi. I'll attempt in the English only, so other people also can understand that. Actually, I already told that the panchayats lot of devolution of fund on the finance commission, central finance commission. 14 finance commission gave lot of money, almost all over the world. All over India, 1.8 lakh crore was devolved to that. Now, 15 finance commission interim report already 30,000 crore have been all over India has been given to panchayat. So next year the full-fledged 15 finance commission report will come, 5-year plan. I don't know the projection of the fund to be given. So panchayat basic services the mandate for the panchayat. In the mandate is the drinking water supply, roads, then the street lighting, and as you say the solar lighting. Solar lighting basically the street lighting has to be done by solar lighting. Otherwise it doesn't work because the dual approach. Voltage drooping and other issues are there, normal electric supply. So
But in that, every village cannot have a solar standalone, because that is why the problem happened, maintenance problem, that guarding the security, all those things. So basically, cluster level village, if it is panchayat having 10 to 15 village, very good proposition. Otherwise, cluster level few villages, few panchayat together, so that they can leverage on the security aspect of the solar panel, maintenance, all those things. Otherwise, if you standalone solar lamp is there, then battery gets stolen. That's problem. The cleaning of the solar panel is a problem because you keep it on height. The practical issues are there. This is one aspect. You can coordinate with the sarpanch and they will be able to fund this. But one you have to do that, because panchayat also doing the gem purchase now. Anything services and products or any goods, they are purchasing gem. So any if you are supplier, so you have to do through gem commodity marketplace. You encourage them, because that's a government mandate also. Panchayat also are doing that, because the digitally payment and digital procurement also is the mandate now. Secondly, drinking water. Drinking, why people are not giving user fee? Because reason is the reliability of supply. One day you supply, after the 10 days you don't supply, then for 11th day you start supplying. They say that we are paying fee, user fee, but no reliability. Initially, the pipe drinking water already project, the Jal Jeevan Mission is there. If it is implemented fully, the reliability comes, then every day the particular time or particular quantity assured to them, the villagers will be able to pay that, because the quality of water and coming at doorstep, then confidence will be there. Okay, we are getting service, they will pay. But without giving the assurance of the drinking water to a pipe water or something, you ask reserve fee, there is a resistance, then they become violent and they don't pay. That's I understand. Really, even urban area also we have the same problem. They don't pay. That is why the main first problem, the first ensuring the service, ensuring the product quality of the service, and ensuring the proper quantity of the drinking water. Then only you things will improve. Otherwise, again, this will go on the chicken and egg problem, and it will continue. And now, because a lot of freedom has been given to the sarpanch, of course, the some state different criteria have there for approval of this thing. But sarpanch now the whole from 2nd October to 31st January, Gram Panchayat development plan is there. Whatever you want to suggest to village, in that Gram Sabha, you please deliberate with them. You tell them that this is required, and they let them decide. And there will be Mahila Sabha before the Gram Sabha also, so that ladies' issues also will be discussed, because ladies have the problem of the fetching drinking water. In all over, they are the first victim of the problem of the shortage of drinking water or any water, because they have to put a lot of labor to do this. Male folk doesn't do. So that is why you have to ensure, and you can involve the self-help group, because self-help group most are very active now. It is in Odisha also, all over world, all over India, more than 6 crore women are the self-help group, so that they can be involved and they can be told that this is the issue we must try to solve in the village. I think this way you have to work, because you have to have Jan Bhagidari. Just by telling somebody do that, they will not do. You have to convince them, they should understand what then only they will try, even they pay for the services. Of course, that's true. Without service user fee, maintenance cannot be done. Electricity payment, other repair, maintenance activity, so many things are there. Panchayat will not get funds for that, because that is why the OSR. Education. How do you educate them to pay some user fees? No. Education, there is called RGSS scheme, Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan. In that, the training of the elected representatives and village officials are done. Even the local people, those who are interested to done. But because of the corona problem, the physical training, it's not working on webinar, which have comfort in our webinar. We have all internet very good availability in our home, I would say, urban India. But really, that's a slightly disruption in there. But education can be done through the program. That is done by mostly SIRD, State Institute of Rural Development. They coordinate various programs, done that at district level, block level, even sometimes Gram Panchayat level also. So you can thank you for a very detailed discussion about the Panchayat involvement into the smart village. We have with us now Dr. Mahesh Ranjan Devata. He want to have a question to the panelist. May I request Mahesh bhai to switch on? Mahesh bhai? Now, if Mahesh bhai is not on the line, maybe SK Jena bhai?
So, good evening, everybody. And indeed, it was a very nice discussion today. We are fortunate to have so many good speakers. And what I believe that though agriculture is not my core subject, but what I believe that in our country like India, we have huge potentiality to increase our agricultural production, and we are happy to have the 300 million today agriculture production in our country, close to 300 million. But at the same time, if we look at our 50% of population are also engaged there, and if we compare with US, then only 0.5% of people engage in US, and you look at the government support given by US to the farmers here, and that kind of support still our farmers are not getting in India. And we have huge potentiality to double our production, double our income. But in the present context, particularly in this law, if we look at the contract farming, there I find there I find that our farmers will be in the weak bargaining power, because though it is a commercial contract, in that commercial contract, when actually it will be in the ground level implemented, the farmers, most of our farmers are not that much educated and literate. They cannot understand the terms and conditions of the agreement. So there may be chance of exploitation, which I personally feel, and I hope Mohini bhai can better put a light on it, that how much our farmers will be in a better position, in an advantage position in that agreement, contract agreement. Over to Mohini bhai. Mohini bhai, नहीं एथिरे I have an objection. चाषी को मूर्ख कहवा I have an objection. चाषी most educated than we all of us. जे बायोलॉजी को डील करूची हजार वर्ष देश रे चाष करूची, and he is cultivating and feeding all of us. He is not that much ignorant, but he is weak in bargain power because he has a financial constraint is there. उसके पास पैसा नहीं है, सामान बेचेगा तो साड़ी, पत्नी के लिए साड़ी खरीदेगा, बच्चे के लिए पुस्तक खरीदेगा, घर के लिए जो रेशन खरीदेगा, वो प्रेशर में रहता है बिकॉज ही डोंट हैव ए सरप्लस मनी. इसीलिए वो वीक रहता है बार्गेन करने के लिए. इसलिए सरकार को उसका सेफगार्ड करना पड़ेगा इन दी एक्ट. ये जो बिल एक्ट बनाया गया उसमें सरकार को सेफगार्ड देना पड़ेगा कि एटलीस्ट नॉट लेस देन एमएसपी खरीदा जाए ऑल द प्रोडक्ट्स. ये हम सेफगार्ड चाहते हैं. जो आपने बताया सही, फार्मर सब जानते हुए भी उनको जरूरी है, वो बेचना चाहता है वो बेच देगा. वो उसी समय सरकार का इंटरवेंशन चाहिए, कानून की ताकत चाहिए कि उसको सेफगार्ड दे. इसलिए हम मांग करते हैं एटलीस्ट मिनिमम एमएसपी से नीचे खरीदारी ना हो, ये सेफगार्ड उनको चाहिए. बाकी दूसरा सेफगार्ड चाहिए कि वो जो अगर कोई कंपनी जबरदस्ती कुछ करता है तो वो जाके कहीं लड़ नहीं सकता है. इसीलिए कोई किसान कोर्ट बने, स्लोली बने, इतना जल्दी नहीं बन सकता है, उसमें राज्य सरकार का भी रोल होगा. तो फार्मर्स कोर्ट एक बने, एक सिलसिला बने, तब जाके उसका रास्ता निकलेगा. नहीं तो ये आसान नहीं है. किसान को अगर फायदा देना चाहते हैं ये आसान है. तीसरा विषय, ये जो आपने स्टैटिस्टिक्स बताया कि डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर भारत में 50% 60% है, ये स्टैटिस्टिक्स में मत जाइए. ये स्टैटिस्टिक्स को हमने जब चिदम्बरम जी ने पहले उठाया था, हमने उसको काउंटर किया था. उन्होंने बताए थे इंडिपेंडेंट के समय 80% डिपेंड था ये देश का किसान ये खेत के ऊपर. हमने उसका कम करके 60 किया, और कम करना पड़ेगा. ये सारी स्टैटिस्टिकल गिमिक से हम पढ़े हैं. यहाँ खितीश बाबू बैठे हैं, कॉमर्स का प्रोफेसर है, वो बता सकते हैं. देश जब स्वतंत्र हुआ उस समय देश का पॉपुलेशन 50 करोड़ था, उसका 80% 40 करोड़ लोग खेती के ऊपर निर्भर थे. आज 125 करोड़ जनता है, उसके अगर 60% 50% अगर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है तो वो भी बढ़ गया है. आप उसको कम नहीं कर सकते. इसलिए उसको एम्पावर करना, उसको वायबल करना, ये ओनली अल्टरनेट हमारे पास है. हमारे जैसे अमेरिका नहीं है. अमेरिका के 6 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, हमारे पास 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है. हमारा फूड हैबिट डिफरेंट है. अमेरिका में 6-7 प्रकार का फसल खेती होता है. हमारा ओडिशा में 432 प्रकार का बैगुन का खेती होता है. 2500 प्रकार का
पूरा देश में बैगन का खेती होता है। तो आप कंपेयर मत करो बाहर के देश के साथ। हमारा देश अलग है, हमारा देश का प्लानिंग हमारे देश में बने, हमारे किसान के हिसाब से, तब रास्ता निकलेगा। धन्यवाद। Thank you, Mohini bhai. Now I will request Ashish Das ji to come to the line and introduce himself and ask the question. Ashish ji, please unmute yourself if you are on the line. Yes. My question is regarding storage and logistics, because we see a lot of our agricultural produce is comparatively perishable compared to any other manufacturing goods. So I am the perspective of Mohini bhai and Dr. Patjoshi, like what are the thoughts how we can reduce our losses by incentivizing or improving storage and logistics? मैं पहले बता दूं, कम से कम पहली बार चाषी पहले बोल दे, किसान, बाकी ऑफिसर लोग बाद में बोले। देखिए, ये जो लॉजिस्टिक का बात आप किए कि लॉस हो रहा है, ये लॉस के साथ किसान का कोई मतलब नहीं है। आप हमसे सामान खरीद लो, हमको पैसा दे दो, हमारा काम खत्म। अगर उसको सेव करना चाहता है सरकार, ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत झूठे आंकड़े आ रहे हैं, कितना लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ तक तो हम मानते हैं, हम चिड़िया को भी खिलाते हैं, पक्षियों को भी खिलाते हैं, कुछ अगर कोई खा गया, चूहा खा गया, कोई खा गया, उसके अलाउ करो, हम उसका दिक्कत नहीं है। और किसान को उसका प्राइस दे दो, उसके बाद किसान को अलाउ करो कि वो प्राइमरी प्रोसेसिंग करे, उसको प्रशिक्षित करो। धान ना बेचे, चावल बेचे, गेहूं ना बेचे, आटा बेचे। इसके लिए उनको तो प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए किसान को एम्पावर करना पड़ेगा। उसके लिए कोई ज्यादा एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है। ये जो कानून है उससे सरल कर दे, उनको कोई सब्सिडी मत दो, बाकी से वो सब कर लेगा। ये जो कानून का जटिलता है, जो अपने इसके जना वो बताइए, इतने कॉम्प्लेक्स बना के रखे हैं, उसको उनका केसीसी कार्ड का नंबर को लाइसेंस मान लो और उसको बोलो वो जीआई टैग लगा के ये मेरा खेत का सामान है करके वो बेच लेगा। मगर उनको एक कानूनी शिकंजे से बाहर निकाल दो। एक ही लाइसेंस, वो एफएसएसआई आ जाएगा, कौन आ जाएगा, वो झंझट में नहीं जा सकता वो। इसलिए किसान को अगर आप प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए अलाउ करते हो ऑन दी बेसिस ऑफ केसीसी नंबर्स, तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। स्टोरेज इसका समाधान नहीं है, क्योंकि हमारे देश में मोनोकल्चर नहीं है। हमारे देश में मोनोकल्चर नहीं है, एक प्रकार का फसल हजारों एकड़ में नहीं है, धान गेहूं को छोड़ के। इसलिए वो कठिन है उसको मैनेज करना। प्राइमरी प्रोसेसिंग इज द ओनली आंसर। इसके लिए सरकार को कानूनी में जो जटिलता है सरल करके किसान को एम्पावर करे। 10-20 हजार चाहिए तो किसान को दे दे। दिस इज माय व्यू। थैंक यू। अब आप जो पूछ रहे थे स्टोरेज एंड ऑल दिस थिंग, एक्चुअली मैं आई गिव एग्जांपल, जैसा ऑनियन का स्टैकिंग थ्रू करना था, इट्स नॉट ए वेरी कॉस्टली थिंग। जब लसन गांव महाराष्ट्र में करते हैं, ये सिंपल स्टैकिंग, वो ऊपर नीचे से ग्राउंड लेवल से आते हैं, ऊपर करके वो स्टैकिंग करते हैं। एरेशन, प्याज का खाली एरेशन चाहिए, इट डजंट। तो फार्मर जब बम्पर क्रॉप होता है, प्राइस क्रैश होता है, उसको घर में किसी भी चक्कर वो स्टोर कर ले, एंड जो प्राइस रिवाइव होता है वो बेचे, तो फार्मर्स को काफी फायदा होता है। ऑल प्रोडक्ट्स हैव हिज ओन टाइप ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, इज नॉट दैट कि सब फैसिलिटी एक ही तरह होगा। तो बेसिकली एक तो घर में स्टोरेज फैसिलिटी करना आसान नहीं हो रहा है, तो मैंने ये बताया तो रूरल हाट में करने के लिए, रूरल हाट में स्टोरेज फैसिलिटी हो, सो दैट जो थोड़ा सा वो एक्टिविटी होगा, 2 दिन 3 दिन, बड़ा लंबा होगा नहीं। और एक तीसरा बात है, मेनी इंपॉर्टेंट थिंग इज बेसिकली हमारा इशू क्या हो रहा है कि जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप नहीं हो पा रहा है। जैसा उड़ीसा में राइस का खूब होता है, सडनली राइस आया तो प्राइस क्रैश हो जाती है, जो भी व्हाटएवर। अभी क्या, जैसा गुआर गम का जो गम निकलता है, गुआर मतलब जो वेजिटेबल, उसका फार्मेसी अदर यूज होता है। एंड यू नो, राजस्थान का एक बंदा, उसमें गुआर गम के 2000 करोड़ का वो बिजनेस है उसका। ही ऑल्सो डेल्व इनटू पॉलिटिक्स नाउ, ही इज एमएलए और सब, काफी बड़ा बिजनेस है। गुआर का प्रिपेयर करते हैं, वो गम निकालता है, उसको बेचता है। तो अभी डाइवर्सिफिकेशन का बहुत जरूरी है, जैसा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से बोले कि जैसा मोर क्रॉप पर ड्रॉप की अलग से डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि हमारा थोड़ा सा ट्रेडिशनल चल रहा है, वी आर नॉट डेल्विंग इनटू न्यू थिंग, और उसी चक्कर में प्रॉब्लम हो रही है। सरप्लस, अभी प्रॉब्लम अब प्लेंटी हो गया है,
इट्स अ क्राइसिस ऑफ प्लेंटी एंड सरप्लस का इशू हो रहा है, जैसा टिपिकल उड़ीसा में और अदर स्टेट्स में ही है। कहीं ना कहीं वो डाइवर्सिफिकेशन जरूरत है, जहाँ पे पानी कम लगे, कि अलग टाइप का जो डिमांड है मार्केट का, क्योंकि अभी टेस्ट हमारा भी चेंज हो गया है, अलग अलग प्रोडक्ट खाने के हो गया, जैसा सोयाबीन हुआ, कुछ जगह सोयाबीन करके काफी देर प्रॉस्परिंग, कुछ जगह ऑयल सीड्स का जैसा हो गया, अभी पल्सेस का था, पल्सेस का इंसेंटिवाइजेशन हो गया तो पल्स शुरू कर दिए, तो ऑब्वियसली वो उसका पर फार्मर का भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज जस्ट ये ग्रो कर रहे थे, उसी को 1000 आदमी ग्रो कर रहे हैं, तो फिर ऑटोमेटिक प्राइस क्रैश होने वाला। एंड दिस इज संभव, जितना भी कर ले मार्केट इकोनॉमी चलेगी, बिकॉज आप इस प्रोडक्ट में इतना इंटरवेंशन कोई कर नहीं सकता है कि उसको प्राइस एश्योरेंस मिल जाए, क्योंकि हमारा किसान का भी हमको नॉलेज बढ़ाना है और उसको करना है। थैंक यू वेरी मच। और नाउ एक विषय में इसमें ऐड करना चाहता हूँ। हमारे उड़ीसा में मूंगफली का, बादाम का खेती, चिना बादाम का खेती बहुत होता था। ऑयल उड़ीसा था, कहाँ गया वो, क्यों गया, कौन पूछेगा। ऑयल सीड के बारे में चिल्ला रहे हम लोग। बादाम का खेती, मूंगफली का खेती इतना होता था, हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ऑयल उड़ीसा, इंडस्ट्री सब था, कहाँ गया। इसलिए उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन उड़ीसा का किसान नहीं करता ऐसा नहीं है, बेचारा करेगा क्या। अभी मशरूम का इतना खेती हो रहा है, कोई तो उसको फाइनेंस कर दे, वो ड्राइंग करे, पाउडर करे, एक्सपोर्ट करे, कहाँ करे। इसलिए वो विषय भी वहाँ है, किसान डाइवर्सिफाई करता है। हम मैंगो में सफिशिएंट हो गए, केला बहुत हो रहा है, ऐसा नहीं है। लीचू कम हो गया है अपने देवगढ़ वाला, ये अलग। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए किसान तैयार है, अगर जो फैसिलिटेशन गवर्नमेंट को ओर से होना चाहिए वो हो जाएगा, किसान सब कुछ कर लेगा। थैंक यू। अभी हमारे पास एक डॉक्टर केबी दास कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, वो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछे। डॉक्टर केबी दास। या जो सवाल आया था कि जो फार्मर्स विल बी एक्सप्लॉइटेड, उसी के आधार पे मुझे जो बोलना है कि इट इज द अप्रहेंशन रियली इज करेक्ट that the small farmers in a contract farming system may be exploited because of the because that they don't understand the terms and conditions of the corporate houses. और जो तरीका है उसको डील करने के लिए मोहिनी भाई को भी मैं यही बताना चाहूँगा कि only cooperatives, unless they come together, they form the cooperatives, they cannot they bargain with the corporate houses. So the only answer to that is the corporatization to deal with the corporatization there. Thank you very much. आप अनम्यूट कीजिए कुमार भाई, ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। I agree with you, ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। Kitish Babu, I agree with you, but it should have been enforced before the bill enacted. That is the whole problem. Government enacted the bill, and now FPO guideline has not come yet. That is the problem. Thank you. रोहित भाई आपण किछि क्वेश्चन पचारिबे, आपण रेज हैंड करथुले। रोहित अनम्यूट करंतु। आज्ञा सर। तो सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। मेरा नाम रोहित है, मैं यहाँ पे आईआईटी दिल्ली में ही पीएचडी स्टूडेंट हूँ। तो मेरा प्रश्न जो है बहुत ही साधारण सा है कि जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत जगह किसान आंदोलन वगैरह हो रहा है और बहुत सारे देश की संपत्ति के साथ भी ऐसे मतलब बर्बाद हो रहे हैं। तो प्रश्न यहाँ पे साधारण सा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे साथ आज हैं श्रीमान मोहन मिश्रा जी। तो आप जैसे लोग जब मतलब सरकार से जुड़े हुए ही लोग हैं, अगर आप सरकार में डायरेक्ट नहीं भी हैं तो भी, जैसे किसान संघ हो गया, भारतीय मजदूर संघ हो गया, ये भारत का एक बहुत ही बड़ा किसान यूनियन है या फिर एक बहुत बड़ा संघ है। तो आप लोग ग्राउंड से सभी जुड़े हुए लोग हैं, ग्राउंड लेवल के सारे दिक्कतों को जानते हैं, प्रॉब्लम्स को जानते हैं। आज मुझे इस मीटिंग पे बड़ा आश्चर्य सा फील हुआ, क्योंकि कई दिनों से इसके ऊपर मुद्दे जो है पूरे देश के खबरें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये एक विचार था कि आप जैसे लोगों से जरूर राय लिया जाता होगा ये बिल आने से पहले,
तभी फिर, क्योंकि सरकार से आप लोग कनेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं जरूर आपसे ये राय लिया जाता होगा कि जब भी ये बिल आता है किसानों के लिए। पर आपके मन में भी आज इस तरह का कुछ एक बिल के ऊपर जो थोड़ा सा विरोधाभास था या कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस की बात आई, तो यही जानना चाहते हैं कि आप जैसे लोग जो भी हैं, तो उनका क्या रोल होता है? क्या वो सरकार को बिल आने से पहले कोई सजेशंस नहीं देते क्या, या फिर उस समय सरकार का क्या रोल रहता है? वो आप लोगों से कंसल्ट नहीं करते या क्या है ये? देखिए, एक दो आंदोलन के बारे में बताया आपने, आंदोलन कहीं नहीं हो रहा है, एक दो स्टेट में हुआ था, वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा, ये पता है हमको, क्योंकि आंदोलन को पॉलिटिकलाइज कर दिया गया। जब ये ऑर्डिनेंस आया तब हमने ये सारे प्रस्ताव को निकाल के करीब 50,000 गांव से, 50,000 गांव से प्रधानमंत्री कुशल के नाम पर प्रस्ताव भेजा गया कि क्योंकि ये कोरोना का समय है, फिजिकल टच करना, फिजिकल कोई एजुकेशन करना असंभव नहीं था, इसलिए ऑर्डिनेंस को स्टडी करके ये 4 मांग की सुधार हो जाए, अगर बिल आएगा तो उसको सुधार कर देना चाहिए। एवं कई सांसदों को हमने कोशिश किए, 100-150 एमपीज को हम कांटेक्ट करें, लोकल करके ये सर भेजा गया है। लगता है कुछ डिस्कनेक्ट तो है कहीं ना कहीं। लगता है कि जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल में डिस्कनेक्ट हो सकता है, पॉलिटिकल लेवल पर डिस्कनेक्ट हो सकता है, कुछ देयर इज ए डिस्कनेक्ट इज देयर, क्योंकि जिस एमएसपी के बारे में हमने बोले थे वही एमएसपी आज कंट्रोवर्सी का सेंटर में आ गया है। सरकार बार बार बोल रहा है, सारे कैबिनेट मिनिस्टर आके एक एक करके बोल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, मगर लिख के नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल टग ऑफ वार हो गया, जिद पकड़ के रह गए और इसमें आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ये दोनों पक्ष जो है, गवर्नमेंट और विपक्ष, वो दोनों ही किसान का इस टग ऑफ वार के कारण किसान का अहित की ओर जा रहे हैं, इस पे किसान नहीं है। बाकी दूसरा विषय है, हम 100% नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। ठीक, आप जो बताया वो सही बात है, हम सरकार से तो इंटरेक्ट करते हैं, प्रस्ताव भी देते हैं, और अगर हमको कुछ इधर उधर की खबर मिल गया हम सुझाव भी देते हैं, जितना वो लेंगे, नहीं लेंगे तो हम अपना स्थान पर है, हमारा स्ट्रैटेजी पर है, हम किसान के पक्ष में, बाकी देखेंगे क्या और देखेंगे। अभी हमारे साथ एक क्वेश्चन आ रहा है अभी, वो है बेसिकली सुभाष सामल भाई से। सुभाष भाई, ସମସ୍ତେ ଟିକେ म्यूट करिवे कि प्लीज, एवरीबॉडी म्यूट प्लीज। यस, सुभाषिष भाई, डू यू हैव द क्वेश्चन नाउ? सुभाषिष भाई, Subhasis in mute. Could you go for next question? Okay, next, but I think that will be the last one. Sukant Mahapatra bhai. Okay, I hope he is also not online. He had given a chart, but he is not online. So since no other question is there, probably we can conclude the session, and it was very, very informative. I have a question. Yes, please. Aryan, yes, please. Sir, yeah, Piyush actually, mo phone are achi. Okay. ठीक है, कौन तो? Thank you for this webinar. Very important to understand the whole perspective of agriculture. Thanks, Mohini sir and Sanjeeb sir for this, for presentation. Actually, I have also involved some of the policy issues in some years for GM crops regulation and policy, and in that period, I also tried to understand the whole issue of agriculture. I extensively work on that petition which helped in keeping a moratorium on GM crops, basically in BT cotton.
And at that time, I was also involved directly with Dr. Swaminathan and Dr. Suman Sai, all some of the people who are directly related to agriculture. At that time, I tried to understand. Also, I gave some notes to Dr. Mullimanar Joshi and WTO Agriculture. But now the situation has changed. I try to understand from this present law perspective, though I don't go into the integrity, what is there, and MSP and other things. There are certain issues which have been raised, but I try to understand. Like that is okay. That one market, one India, one market. That is a very welcome state. But from the because I always believe in that India has a different perspective. Like Mohini's भाई जो कहते कि India cannot be compared in US. I have been visited some of the markets, farmers market in US also. The criteria, the system is totally different from India, and their farmers is hugely give subsidized, and monoculture is very highly, one of the common features there, and they are highly, educated, many mechanized system there. But at the same time, India has also very diversification of the agriculture in different states, like Punjab and some of the states has a very high, agriculture growth in compared to Odisha and like Bihar and some of these low agriculture productive states. In that context, if we have a one, market, and how, like, if farmers from Andhra Pradesh will have a, they have a like high output and they will sell it to Odisha, and there will likely to be impacted this Odia farmers because the price, there will be price bargain and all these things will happen. So I think, but I don't know whether these things has been visualized, discussed during this when the law came into force. So what will be the likely impacted? I would like to know from Sanjeev sir as well as Mohini sir. Hello. Noise are coming. Hello. Everybody mute one please. Some noise is coming. Yeah, now Patjoshi sir, you can start. The issue definitely will, some issue will come from small and marginal farmers or tenant farmer or sharecropper farmer, because already the bargaining power is less with them because of their already situation in the villages. But actually advocacy, awareness, and certain way of IEC activities, which we call information, education, and some sort of a communication system we have to develop so that they become aware, because information asymmetry in villages is very high. Now, because of mobile technology and other information dissemination, this has slightly reduced, but still there is an issue. I mean, the price discovery. That's what I told INAM, the Electronic National Agriculture Market. This is also beneficial for price discovery because there is some sort of a display system is there. They know that which all neighboring market, what is the price and all this thing. So this issue will definitely come. There's no doubt on that. I also feel that because we also belong to certain village area, we have seen this issue. Not getting support of full MSP, all those things. But one, you must understand, because to solve a problem, there has to be certain game changer, certain rule change, law change. And in that the consequence will be having, but majority optimum is that majority get benefit out of it. So when the majority of farmers getting benefits, obviously it is welcome. There's no doubt on that. You will be definitely like, of course, the freedom to sell, because this was a very restrictive practices were there, because you have to go to only APMC and sell there, otherwise there is the problem of the because you are getting ostracized. Basically, this was happening. So now the farmers are anywhere they can go, depending on their convenience, their infrastructure, the transport mechanism they have. Of course, they have told only rural market. If rural market strengthen, definitely will be there. Secondly, definitely, I also feel that certain insurance mechanism has to be penetrated, because the vagaries of nature we can't control. Flood, drought, storm, cyclostorm, Orissa is every time cyclostorm. So the insurance has to be built in, because every 100% coverage. The line now we are doing the health insurance coverage, life insurance coverage, big way. So crop insurance also should be big way, so that these all negative effect can be compensated very easily for them, and obviously the system procedure has to be done easy for them to understand. And I agree with you. There will be some maybe issues in implementation. Then no doubt.
Thank you very much. And another thing I want to add, we should also which are having middle income and above, we should have also behavioral change in our ourselves. When we buy anything from farmer directly, we should not bargain with him. Whatever he is asking, if it we find reasonable, we should not be greedy enough and miser enough to bargain with him. Like this is a usual habit with us. That we should really stop at our level. Let us cultivate that culture. It doesn't happen in Western world, especially when they buy from the farm gate. One should not bargain too much with the farmer. Otherwise, he just has to give it because you are a suited, booted person, and that fellow is just a half naked and all those things. Then obviously that problem happens because you feel superior and you dictate with him. Typically, master-slave relation happens, and then the farmer really get into it. Irrespective of discussion webinar, if we do not change our behavior pattern and our mindset to them, nothing will happen. We must realize that. Nice concluding, Dr. Patjoshi, for the behavioral aspect we have to change. So I think we are done with our question. Yes, Kumar sir, just one last point, if I can just add. I mean, this is not a question. In fact, I just come to know that tomorrow all these amendment that has been taken place in all these statutes has been challenged, and tomorrow this matter is coming out for the Supreme Court. I wish it should not be, and it should be upheld. Though with Mohini is concerned that yes, all those gaps should be filled up, but these amendments have been challenged in the Supreme Court. Tomorrow this matter is coming. Please go ahead. Yes. So it is. So since there is no question and nothing to be followed with, I conclude this session with the remark that it was a very, very lively session. It started from the ground level of farmer, ended with a very sophisticated infrastructure with market philosophy, and finally linked to Western countries, how they deal with the farmer, trader, and finally the behavioral aspect of the human being towards the farmer and making it a civilized, developed, and economically successful farmer-oriented society. With this few remarks, now I request NN Panda Bhai. Hello. Am I audible? Yes, please. Jai Jagannath. Good evening, everybody. Honorable Chief Speaker, Mananiya Shri Mohan Mishra ji, National Secretary, Bharatiya Kisan Sangh, your presence is indeed heartening. Evening you also witness of eminence, including Speaker Shri S.K. Patnaik ji, former Secretary, Minister of Agriculture, Government of India, and Dr. Sanjeeb Kumar Patjoshi ji, Joint Secretary of Panchayati. On behalf of RBM and Nrsimhanath Ponda, member of RBM, would like to take the opportunity to thank each of you. We greatly appreciate their presence and their inspirational address. Despite of their busy schedule, they enlightened us their thoughts, wisdom, ideas of a new farm law. I am sure all the important points that I have made in their speech will be very helpful to us, all the participants. I would like to express my gratitude to all the eminent speakers who enlightened us the new farm law. I also extend my heartfelt thanks to the audience who are participants for YouTube and Microsoft Teams. Extend my heartfelt thanks to Tapas Bhai, General Secretary of RBM, Sangram Bhai, President of RBM, and Saroj Mananda Bhai for coordination of the webinar. And also thanks to Sukumar sir, Sailendra Bhai, Subhasis Bhai, Janna Bhai, and all are connected to the blessed dice. Thank you, everybody, and have a wonderful day. Thank you. So,
नमस्कार समस्त को नमस्ते Namaskar, and we will probably conclude the session with national anthem. And thanks, Nrsimha Bhai, to give the vote of thanks. And who will, Tapas, are you playing the national anthem? Tapas? Yeah, doing. Okay. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा हिमाचल यमुना गंगा तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे जय तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे माता की जय भारत माता की जय। जय Thank you. And it is little bit delayed. Definitely, we are delayed by half an hour. But it is a great thing that our speaker has bear with us for this half an hour. And any comment from Sangram Bhai? No. When all intellectuals discuss and prudent people discuss, we must hear. Even if it is delayed, it is benefit for all. Yeah. That is privilege. Okay, sir. Thank you. And we will conclude and we will leave the. Namaskar. This all video is over the YouTube. We would request, in fact, the last comment, of course, people must have left.